Here it was very hard to exchange money and we have a dollars only. A lot of foreigners are here. Flight के साथ यहाँ पे travel करिए. एक तो time बचेगा, दूसरा पैसे भी बचेंगे. यहाँ पे बहुत सारे towers नजर आते. भाई, we are in Kutaisi. This is the guy from Kutaisi. What is your name? Eso. Assalamu alaikum guys. Good morning, ni hao. Sat Sri Akal. Sawadika. I don't know. Namaste. Namaste. Yeah, guys, this is our journey from Mestia to Kutaisi, and we hired this whole car because there was no way to go to Kutaisi. So we hired this car for 300 laris and because I have a flight to go back to Dubai, UAE and Abu Dhabi, we decide to go because Mestia is, we already explored, it's a small town, so we are going back. So guys, today is Sunday here. It was very hard to exchange money and we have a dollars only. So what we did, we a debit card to withdraw the money from ATM, which cost us pretty high. We withdraw 100 lari with the debit card of UAE. It's cost us Like 30% of fee. yeah. So 30 lari is only to exchange money from UAE dirham to laris. It's very expensive, but we don't have option. We have to use that because we don't have money and we don't want to stay one more day here. Nobody except the dollar here. They are afraid about the exchange rate. So we try already restaurants, bus stop, bus station, office, everywhere. Nobody except the dollar to exchange. Oh, that's our private driver. Yeah, he's our. Hello. So guys, we are going to Kutaisi now from Mestia. It was a nice journey. So you say that we have paid 300 lari and you have withdrawn 100. We have some money with us before. No? Yeah, like 200. Yeah. Okay guys, we will show you the last moment in Mestia to the way to Kutaisi. So when we came here guys, it was a night time, so now it's a daytime. Look how Wanna go to the mountains? yeah, so this is the place to come and you can hike to the mountains. So guys, look, this is a touristic place. A lot of foreigners are here. Look guys, how many nationalities are here, and it's a really touristic place. You can see guys how every house in this area guys, it's a guest house. You can knock any door and ask them we wanna live here and they will give you the space to live. I mean, we have no option to go there. Normally they charge like 40 lari from here to Kutaisi. So guys, those are the prices and the stuff we want to share with you. Guys, there is a airport here as well. If you planning journey from UAE or from anywhere else, please, when you plan your trip, you should have to check the plane tickets. We saw this morning, it's cost only 50 lari from Kutaisi to Mestia. So guys, whenever you plan your journey, you have to think about there is a local airports everywhere in these areas. So you guys can use the airport more cheaper than local transport. So whenever you plan your journey, look around the local airports from, for example, from Kutaisi to Batumi, from Kutaisi to Tbilisi,
फ्रॉम कुतैसी टू मेस्टिया। तो भाई कुछ इस तरह से है ये एरिया। इट्स रियली ब्यूटीफुल एरिया एंड इट्स अ वेरी गुड अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट हियर। यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। ये जगह जो है ना, ये कुदरत का एक बेहतरीन शिकार है। इस जगह की अपनी एक खासियत है, अपना एक म्यार है। तो भाई अपने माइंड में ये चीज़ रखिए कि अगर आप जॉर्जिया आ रहे हैं तो इस जगह लाजमी आइएगा और कोशिश कीजिएगा आप तबिलिसी आ रहे हैं तो वहाँ से यहाँ की फ़्लाइट बुक कर लीजिए रिटर्न। कितने देर आपने स्टे करना है। यहाँ 1 वीक तक एयरपोर्ट बिजी रहता है। आपको 1 वीक का मार्जिन रख के यहाँ की फ़्लाइट बुक करनी पड़ेगी। तो गाइस मुझे तो इस चीज़ का आइडिया नहीं था। यहाँ आने के बाद इन चीज़ों का पता चला है कि यहाँ आके आप लोग लोकल फ़्लाइट्स जो यहाँ पे हैं वो बहुत ज़्यादा चीप हैं। तो भाई ये माइंड में रखिए कि जब आप आते हैं तो इन फ़्लाइट के साथ यहाँ पे ट्रैवल करिए। एक तो टाइम बचेगा, दूसरा पैसे भी बचेंगे। तो आप लोग जब भी यहाँ आएँ तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि आप लोग फ़्लाइट्स बुक करें, रिटर्न फ़्लाइट्स। तो भाई आप लोग व्यू देख सकते हो जो मैं आते हुए नहीं कर सका, क्योंकि मैं तो एक हिचहाकिंग के ज़रिए यहाँ पे आया हूँ और दूसरा उस वक्त रात हो चुकी थी। तो नाइट में मैं आपको ये चीज़ें नहीं दिखा सकता था। तो अभी आप लोग देख सकते हो कि ये कितनी ब्यूटीफुल वैली है। देखिए यहाँ पे अमेजिंग व्यूज़। अगर आप the best place to visit is Mestia। मैंने बहुत सारी वीडियोस, ब्लॉग्स देखे हैं, लेकिन इस तरह की इन्फॉर्मेशन मैंने किसी ब्लॉग में नहीं देखी। तो आप लोग बड़े सस्ते में यहाँ आ सकते हो और इसको जो है एक्सप्लोर कर सकते हो। भाई व्यू चेक करो। भाई यहाँ पे गेस्ट हाउस जो है ना वो 15 लारी से लेके 25 लारी तक आपको 1 बेड, मतलब एक रूम में आप लोग 30 लारी से लेके 50 लारी तक एक रूम जो है यहाँ पे ले सकते हो गेस्ट हाउस में। और यहाँ के गेस्ट हाउस जो हैं वो इस तरह से हैं क्योंकि जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो उन्होंने रूम रखे हुए हैं जो वो जो लोगों को गेस्ट हाउस के तौर पे देते हैं। तो आप जब भी यहाँ आएँ आप लोगों को सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलेगा, वो है गेस्ट हाउस। जो होटल्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। तो आप ज़ाहिर है 200 लारी या 150 लारी या 200 लारी आप पे नहीं करना चाहोगे अगर आपके पास 40 लारी या 50 लारी में एक ऑप्शन है। हमने काफ़ी जगहों पे घूम फिर के देखा है यहाँ पे। तो भाई ये बेस्ट ऑप्शन है कि आप लोग यहाँ गेस्ट हाउस में रुक सकते हो
बहुत सारे गेस्ट हाउस जो हैं वो आपको फूड भी देते हैं, मतलब कि उनका ट्रेडिशनल फूड उनके वो खुद कुक करते हैं और आपको प्रोवाइड करते हैं। तो भाई यू हैव अ मल्टीपल ऑप्शंस एज पर योर बजट, आप लोग यहाँ पे ले सकते हो। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे टावर्स नज़र आते हैं, ये देखें, अगर आप देख सकते हो, शायद मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। तो भाई यहाँ की ब्यूटी जो है वो नेचुरल ब्यूटी है। देखो भाई ये एक डेस्टिनेशन आया है मेस्टिया के बाद, लताली। ये देखिए ज़रा व्यू यहाँ के, कितनी ब्यूटीफुल जगह है ये। भाई यहाँ पे काउज बहुत ज़्यादा हैं, ये देखिए। Guys, check the view here. It's a rainy day, the time for rain, and cloud is very close to this place. It's a high place. Bye. Hi guys, we are in Kutaisi with this Russian guy. Don't think he's a girl, he's a guy, okay? We just arrived here. What time now? You have a phone. No, it's not showing the time there, no? So tell me the time, so we have to figure it out. That's the time. 7:48 guys. And we left from there, from Mestia, almost 4 hours 30 minutes we arrived here. So we left there from 2:30, something like that. So guys, this is Kutaisi, and I think the Kutaisi city is like how many minutes far away from the airport? Like 15 minutes or 20 minutes, right? Yeah. 20. So guys, if you are coming to Kutaisi airport, the city is only 20 minutes far away, maximum. That's what I observed. So we arrived today, 19 June 2022. Right? 2022, sorry. So we are here in Kutaisi. So guys, in 2 days we will show you Kutaisi, how look like and what is the things over here. So we will show you guys. So we are going to find our hostel. Hello guys, we are in Bolt now, and this is the guy from Kutaisi. What is your name? Meso. He's Meso. And we are going to our hostel. There is a Mr. Rosti, and it's cost us like 5 lari. So guys, let's reach to the hostel and then we will talk. शानदार व्यू।